Good morning, students. Good morning, everybody. I welcome Dr. Sandeep Trivedi. I welcome Dr. Nityesh Bhatt. And I also welcome Professor Samish Dalal. And myself, Dr. Himanshu Buch. We are over here to give some useful tips to all the dear citizens and the future leaders of India. So first of all, I welcome Dr. Sandeep Trivedi, sir, to address all of you. Welcome, Dr. Sandeep, sir. થેન્ક યુ સર. આપણે નક્કી કર્યું છે પ્રમાણે હું ગુજરાતી ભાષામાં સ્ટુડન્ટ સાથે થોડી વાતો કરીશ. આજનું પેનલ ડિસ્કશન સ્ટુડન્ટ્સ માટે ઘણું જ સારું રહેશે. ખૂબ સારું માર્ગદર્શન એમને મળશે એવી મને ચોક્કસ ખાતરી છે. હું છેલ્લા લગભગ 30 વર્ષથી વિદ્યાર્થીઓને ભણાવી રહ્યો છું. એમની સાથે કોલેજમાં ઘણા બધા પ્રોગ્રામ્સમાં, ઘણી ઇવેન્ટ્સમાં, ઘણા અસાઇનમેન્ટ્સ પર એમની સાથે કામ કર્યું છે અને એમના સ્વભાવને અને એમના આદતોને થોડી જાણી શક્યો છું. તો એના બેસિસ પર હું થોડા સૂચનો કરવા ઈચ્છીશ. અત્યારના સમયમાં જે રીતની સ્થિતિ છે અને સ્ટુડન્ટ્સને જે રીતે પ્રિપેર કરવાની જરૂર છે, જે રીતે એમણે તૈયારી કરવાની જરૂર છે, એ બાબતનું થોડું માર્ગદર્શન હું આપવા માંગુ છું. એમાં સૌ પ્રથમ તો વિદ્યાર્થીઓએ એક વસ્તુ બહુ સમજવાની જરૂર છે કે કોલેજમાં જે સમય તે લોકો ગાળવાના છે, 3 વર્ષ કે 4 વર્ષ, એ સમયનું મહત્વ એમણે સમજવાની જરૂર છે. તમે એ સમયને સમજો અને એને ખૂબ મહત્વ આપો. કારણ કે તમારા કોલેજના જે 4 વર્ષ છે એ એક પ્રકારે તમારું રોકાણ છે તમારા પોતાના વ્યક્તિત્વમાં. અને આ વર્ષો દરમિયાન તમે ખરેખર તો તમારા માટે ખૂબ જ મોટો રચનાત્મક ખજાનો, જેને આપણે કેપિટલ, ક્રિએટિવ કેપિટલ કહી શકીએ, એ બનાવવાના છો. એમાં તમે જે વિષયની વધુ જાણકારી મેળવવાના છો એ વિષય વિશે તો જાણશો જ. એમાં થોડો અનુભવ અને ટ્રેનિંગ પણ લેશો. પણ એ સાથે સાથે જે એક પ્રોફેશનલ નેટવર્ક બનાવવું જોઈએ, જે એટીટ્યુડ બનાવવાની એક જરૂર છે એ વિશે, અને એક ચારિત્ર્ય ઘડતર જેને કહીએ કે એક કેરેક્ટર બિલ્ડિંગ કરવાની પણ જે જરૂર છે. અને એ ઉપરાંત તમે જે કંઈ પણ અસાઇનમેન્ટ કરો, જે કંઈ પ્રોજેક્ટ વર્ક્સ કરો, જે કંઈ બીજા કો કરિક્યુલર કે એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટીઝમાં ભાગ લઈને એમાંથી જે અનુભવ મેળવો, એ બધા અંગત કામો દ્વારા એક ખજાનાનું નિર્માણ કરો છો અને એમાંથી તમને સૌથી વધુ શીખવા મળે છે. ફક્ત વિષયની જાણકારી એ જરૂરી નથી. ઓફકોર્સ જરૂરી તો છે જ, પરંતુ એ સાથે સાથે ઘણું બધું બીજું પણ શીખવા જેવું છે કે જે તમને તમારી પ્રોફેશનલ લાઈફમાં ખૂબ જાણકારી મેળવી શકે. એક વસ્તુ સમજો કે તમે અત્યારે જે સમય જે રીતે ઉપયોગ કરો છો એને જો સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકશો તો ચોક્કસથી એ તમારા માટે એક ખૂબ જ મજબૂત પાયો બનાવશે, ખૂબ જ સ્ટ્રોંગ ફાઉન્ડેશન બનાવશે, જે તમારી પર્સનલ લાઈફને અને ઇવન પ્રોફેશનલ કરિયરને પણ ભવિષ્યમાં ખૂબ જ સારી રીતે નિર્માણ કરવામાં મદદ કરશે. અને એટલે જ કોલેજના આ સમયનું મૂલ્ય ત્યારે ઓછું ન આંકશો. એને હંમેશા વધુ વિસ્તારવા પર ધ્યાન આપવાની ખૂબ જરૂર છે. અને એના માટે જે કંઈ પણ કાર્ય કરવાની જરૂર પડે એ ખૂબ જ ધૈર્યથી અને ખૂબ મહેનતથી એ કાર્યો કરવાની જરૂર પડે. એમાં આગળ વધવું પડે, ઇનિશિયેટિવ લેવા પડે. કોઈની રાહ જોવી ન જોવી એ તમારે નક્કી કરવાનું છે, પરંતુ કોઈ સાથે ન હોય તો એકલા પણ આગળ વધવું અને એ અનુભવ મેળવવો ખૂબ જરૂરી છે. બીજું એક સૂચન હું એ કરવા માંગીશ કે ક્યારેક ક્યારેક આપણને ખૂબ વિષમ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડતો હોય છે અને આપણે નિર્ણયો લેવામાં ક્યારેક અચકાતા હોઈએ છીએ. મારો અનુભવ એવું કહે છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં અચકાવવું નહીં અને સારા નિર્ણયો ચોક્કસથી લેવા.
આપણે જિંદગીમાં ઘણી વખત એવા નિર્ણયો લઈએ છીએ કે જેનાથી ક્યારેક થોડા આગળ વધીએ છીએ તો ક્યારેક થોડા પાછળ હટવાનું પણ થાય છે, પણ નિર્ણયો લેવા જરૂરી છે. કોલેજના અભ્યાસ દરમિયાન અને એ પછીની થોડી કારકિર્દીના શરૂઆતના વર્ષોમાં પણ થોડો સમય કાઢીને પરિસ્થિતિને ચકાસીને ધીરજપૂર્વક સમજી વિચારીને નિર્ણય લેવો બહુ જરૂરી છે. ક્યારેક કોઈ નિર્ણય લેવાથી થોડી પીછેહટ થાય તો નિરાશ થવાની જરૂર નથી, બિલકુલ નહીં. ફરીથી આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ફરીથી એક સુંદર જિંદગી અને એક સફળ કારકિર્દીનું નિર્માણ કરવા માટે જે કંઈ પણ જરૂરી હોય એવા નિર્ણયો તો લેવા. નિર્ણયો જો નહીં લઈએ તો આગળ નહીં વધી શકાય. કદાચ એના લીધે આપણે વિફળ ન થઈએ, સફળતા પણ નહીં મળે. એટલે નિર્ણયો લેવા તો જરૂરી છે અને એ ચોક્કસથી સારા પરિણામો આપશે જ. એ પછીનું એક બીજું સૂચન મારું એવું છે કે અત્યારની પેઢીમાં આ એક મારું નમ્ર મંતવ્ય છે કે વિદ્યાર્થીઓ કામ કરવાની બાબતમાં થોડા પાછા પડે છે, મહેનત કરવાની બાબતમાં થોડા પાછા પડે છે. પરંતુ મારા અનુભવથી મને એક સમજાયું છે કે હાર્ડવર્કનો કોઈ પર્યાય નથી, અથાગ પ્રયત્નોનો કોઈ પર્યાય નથી. અને મને લાગે છે કે તમે ધાર્યું હોય એના કરતાં પણ વધુ કાર્ય કરવા માટે તૈયાર રહો. કદાચ એવું પણ બને કે જે તમે ન ઈચ્છતા હો એ કરવું પડે તો એ કરવા પણ તૈયાર રહો. અને હંમેશા હંમેશા જિંદગીના કોઈ પણ સ્ટેજ ઉપર, શરૂઆતની કારકિર્દી હોય એ પછી 10-15 વર્ષો પછી કે 25 વર્ષ પછી પણ હંમેશા વધુ કાર્ય કરવા માટે તૈયાર હશો તો હંમેશા તમને એક કોન્ફિડન્સ મળશે. જો તમે વધુ કાર્ય કરશો તો ફાયદો પણ તમને જ વધુ થવાનો છે અને એનાથી તમારો જ આત્મવિશ્વાસ વધશે. અને હું એવું નમ્રપણે માનું છું કે જ્યારે કોન્ફિડન્સ આવે છે ત્યારે ઓથોરિટી મળે છે. એટલે તમારે તમારા વિષયના એક નિષ્ણાત તરીકે જો પંકાવવું હશે તો એ ઓથોરિટી મેળવવી જરૂરી છે. અને એ ઓથોરિટી મેળવવા માટે તમારે ચોક્કસથી ખૂબ કામ કરવું પડશે, એક આત્મવિશ્વાસ કેળવવો પડશે તમારા વિષયમાં, અને એ પછીથી તમે એ ઓથોરિટી વિશે વિચારી શકશો. આપણને ખ્યાલ છે કે દિવસમાં 24 કલાક જ છે, પરંતુ એનો એક યોગ્ય ઉપયોગ કરવા માટેની પદ્ધતિ શીખવી પડશે. 24 કલાકમાં કઈ રીતે સારી રીતે સમયનો ઉપયોગ કરવો, ખંતપૂર્વક, નિષ્ઠાથી અને સતત જો આ કાર્ય થશે તો ચોક્કસથી એનું ફળ મળશે જ. એ પછી મારું એક બીજું સૂચન છે કે જે હું હંમેશા મારા વિદ્યાર્થીઓને કહેતો હોઉં છું કે તમારા માતા પિતાની ઈચ્છાઓને અને એમના સ્વપ્નોને ખૂબ માન આપો. રિસ્પેક્ટ યોર પેરેન્ટ્સ, their wishes and their dreams. આ માટે હું તમને એટલું કહેવા માંગીશ કે તમે જ્યારે પણ જ્યાં હો ત્યાં જે કાર્ય કરો હંમેશા તમારા માતા પિતાને મનમાં રાખો. તેઓએ તમારા માટે ખૂબ કાર્ય કર્યું છે. તમારા જન્મથી લઈને આજ સુધીની પરિસ્થિતિમાં તમે જે રીતે આગળ વધ્યા છો એમાં હંમેશા એમણે તમારી સફળતા વિશે, તમારા અભ્યાસ વિશે, તમારા કાર્યો વિશે તમારા માટે હંમેશા સારું વિચાર્યું છે. અને હું એ ચોક્કસથી કહીશ કે માતા પિતાની તમારી પાસેથી થોડી અપેક્ષાઓ હશે જ. એવો કદાચ ક્યારેય પણ તમને એ વિશે કહેશે નહીં, પરંતુ તેઓ હંમેશા મનમાં ઈચ્છતા હોય છે કે મારો પુત્ર કે મારી પુત્રી પોતાના જીવનમાં ખૂબ આગળ વધે અને ખૂબ સફળતા મેળવે. અને એ તમારા ભવિષ્ય માટે હંમેશા ચિંતિત પણ રહેશે જ. એક વસ્તુ સમજો કે તમે તમારા માતા પિતાના ઋણી છો, પણ એ ઉપરાંત તમારી એ ફરજ પણ બને છે કે એમની જિંદગી દરમિયાન તમારા માટેના જે સખત પ્રયત્નો હતા એ પ્રયત્નોનું તમારે વળતર આપવું પડશે. અને એ વળતર જો તમારી સફળતાઓ થકી આપો તો એ ખૂબ જ સારું રહેશે. વેરી ગુડ. તમે જીવનમાં હંમેશા સફળતા મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો. હું તમને એક ચિત્ર તમારા મનમાં બનાવવા માટે રિક્વેસ્ટ કરીશ કે ધારી લો કે એક મોટા સભાગૃહમાં, ઓડિટોરિયમમાં તમે તમારી અભ્યાસને અંતે
ગોલ્ડ મેડલ લેવા માટે સ્ટેજ ઉપર જતા હો અને એ વખતે ઓડિયન્સમાં જો તમારા માતા પિતા એ જોતા હોય તો એમને કેટલો આનંદ થશે એ તમે વિચારી જુઓ. એ આનંદ તમે તમારા માતા પિતાને આપવાનો પ્રયત્ન કરો, કારણ કે એ આનંદ છે કોઈ રીતે ખરીદી શકાતો નથી. એ પૈસાથી તમે નહીં આપી શકો. એ તમારા ખૂબ જ પુરુષાર્થથી, ખૂબ જ સખત પ્રયત્નોથી એ ઘડી, એ મોમેન્ટ તમે તમારા માતા પિતાને જો પ્રેઝન્ટ કરી શકશો તો એનાથી મહામૂલી કોઈ બીજી ગિફ્ટ નથી. અને મારી તો એ તમને ખાસ રિક્વેસ્ટ છે, મારી ઈચ્છા છે કે તમે આવી સફળતા તમારા જીવનમાં ચોક્કસથી પ્રાપ્ત કરો. અને એ ઉપરાંત એક બીજું સૂચન એ છે કે અત્યારના સમયમાં હું છેલ્લા 20-30 વર્ષોમાં જો કમ્પેરિઝન કરું તો અત્યારે એક એવી સ્થિતિ છે કે જ્યાં મજબૂત ચારિત્ર્યની ખૂબ જરૂર છે. એક સ્ટ્રોંગ કેરેક્ટર માનવી જો વિકાસ કરી શકે તો એવા માનવીઓની ખૂબ જરૂર છે. કદાચ એવા માનવીઓની અછત પણ થઈ રહી છે. અને એ માટે તમે તમારા કાર્યમાં એક સાતત્ય લાવો, તમારા વિચારોમાં એક નિષ્ઠા લાવો અને તમારા શબ્દોમાં એક સત્યને હંમેશા છલકાવો. એ ખૂબ જરૂરી બનશે. લોકો સાથે સારો વ્યવહાર કરવાની જરૂર છે. એક જેને આપણે ઇન્ટરપર્સનલ સ્કિલ્સ કહીએ, એકબીજા સાથે સારી રીતે રહીએ, સારી રીતે વાતો કરીએ અને એકબીજાનું કોઈ ખોટું ના ઈચ્છીએ. એવા સારા ગુણો, કારણ કે આવા સારા ગુણો કોઈ શીખવનાર નથી. સ્કૂલમાં કે કોલેજમાં વિષયો વિશે ખૂબ શીખવે છે, પરંતુ ચારિત્ર્ય ઘડતર વિશેની વાતો કરનારા ઘણા ઓછા છે. ઘણા કુટુંબમાં મેં એ પણ જોયું છે કે માતા પિતા પાસે પણ ક્યારેક એવો સમય હોતો નથી, કારણ કે તેઓ પણ ખૂબ બિઝી હોય છે. પરંતુ તમારે એક સમજવાની જરૂર છે કે જે કંઈ પણ સારા ગુણો છે, વિનયથી વાત કરીએ, વિવેકથી વાત કરીએ, સારા શબ્દો, કે તમારા સારા શબ્દોથી જો બીજાને ખુશી થાય તો એનાથી સારી ક્ષણો કોઈ નથી. અને જીવનમાં હંમેશા તમે આ પ્રયત્ન કરો, એ ખૂબ જરૂરી છે. અને છેલ્લું એક સૂચન આપીને હું પછી વિરમીશ. તમે જે ઈચ્છશો એ કરી જ શકશો. આ મારી માન્યતા છે અને મને આ હંમેશા મેં અનુભવ્યું પણ છે. કારણ કે સઘળું છેવટે તમારા હાથમાં છે. તમે જે ઈચ્છા કરો એ સફળ થઈને રહો, એ માટે તમે જ નક્કી કરી શકો. તમે જીવનમાં હંમેશા કંઈક યથાર્થ કરી શકશો, કંઈક ઉત્તમ ફળદાયી કાર્ય કરી જ શકશો. જરૂર છે ફક્ત એક નિર્ણયની, યોગ્ય નિર્ણયની, એક કદમ આગળ વધવાની, અને એ પછી સફળતા તમારા કદમો ચૂમશે. આ એક વાક્ય બહુ કાયમથી આપણે વાપરીએ છીએ, પરંતુ એના માટે એક કદમ આગળ વધવું જરૂરી છે અને ખૂબ જ હાર્ડવર્ક કરવું જરૂરી છે. તો મારી તમને એક નમ્ર વિનંતી છે કે આ સૂચનોને ધ્યાનમાં રાખીને તમે એક એવો અભિગમ અપનાવો કે જેનાથી તમારા જીવનમાં તો ચોક્કસ તમે સફળ થશો જ, પણ તમારી આજુબાજુ જે લોકો છે, તમારું કુટુંબ છે, તમારી ઓફિસના લોકો છે, તમારી સમાજના લોકો છે, એ બધાને પણ તમે ખૂબ ખુશ કરો અને એમની પણ સફળતામાં ભાગીદાર બનો, એવી મારી શુભેચ્છા છે અને વિનંતી પણ છે. ધન્યવાદ. Very nice, very nice. Thank you, thank you. Thank you, Dr. Sandeep sir. Thank you. Bahut saras, bahut saras. Friends, now I invite Dr. Nitesh Bhatt sir to share his views. Welcome, Dr. Nitesh sir. Thank you, Dr. Butch. The topic allotted to me, friends, is how to set the goal and then how to achieve it. I would like to speak in English as well as Hindi. Some words which comes to our mind when we talk about goal is aim, target, dream, or in Hindi, laksh, uddeshya, जीवन की परिभाषा, and I can go on and on.
Friends, in my school days and later in early college days, there was a famous movie which came that was Qayamat Se Qayamat Tak, which gave an identity to, okay, and fame to Amir Khan also. There was a very, very famous song in that, sung by Udit Narayan ji. The song was like that. I'm sure all of you must have heard this. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ. In the subsequent para, there were 2 more lines. कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ. In our days, career means engineering, doctor, lawyers, and limited goals were there, and of course, business was also there. Here we are talking that society, and as my predecessor was speaking about the parents' expectation, right? So, friends, the family and society has a lot of expectation from us. We will achieve something in the life, and we will make the family proud, society proud, country proud. But have we really thought some goal for ourselves, right? Some audacious goal for ourselves so that we can make them proud, right? And we ourselves feel happy, self-satisfaction comes. One of the biggest inspirational icon of the recent time, the late Dr. APJ Abdul Kalam, a very famous quotation of Dr. Kalam, which we must have heard very often. आपने और हमने सभी ने सुना. Dream is not what you see in sleep. सपने दोस्तों वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं. Dream is not something what you see in sleep. It is something that does not let you see. Very nice. First we should have dream, some specific goal, some target in our mind. Once we decide that, right, that will not allow you to sleep. That will not allow us to sleep. So what will happen? Once there is some target, सोते जागते हर एक्टिविटी में, हर गतिविधि में, क्लास में, बाहर, खाते समय, हर समय पे that goal, that target will drive us, right? Very important is to set the goal. So the friends, the difference is if there are 2 categories of people, one having some predetermined goal and another who does not have the goal. What is the difference? Difference is those who are having goal, they will get energized with those goals continuously. They already have a clear-cut direction. Which direction you would like to go? What do you want to attain? At which speed you should proceed? जब सारी दुनिया चल रही है, तो चलना तो जरूरी है, लेकिन आप उनके साथ रहेंगे. तो आपको अगर डायरेक्शन क्लियर है, तो आपको चलना भी जरूरी है और भागना भी जरूरी है, और किसी स्टेज पे रुकना भी जरूरी. So it will energize you. It will give clear-cut path, direction to us. It will set a challenging path for us. And out of all, it will lead us to out-of-the-box thinking. Linear path भी जरूरी है, लेकिन कई बार unconventional path भी लेना जरूरी है. एक लकीर का फकीर होना जरूरी है, लेकिन out of the box, क्या हम कुछ नया सोच सकते हैं? और वहां से कुछ वर्ड निकलते हैं, innovation. Right? Invention. Can we do something new? So very important is to set the goal and why to set the goal. The next thing is goals, friends, can be of 2 types. One is long-term goal, second is short-term goals. Sometimes when we ask the youngsters, what is your goal? I want to clear CAT exam or JEE exam. I want to become an engineer. This is a short-term goal. To become an engineer or to crack the CAT is a short-term goal. Issue is what do you want to do after clearing your JEE or CAT or so? Where do you see yourself after 10 years or 20 years or 30 years down the line? Right? Can't we think of becoming an entrepreneur? Right? Can't we have our own unicorn? Right? Can't we become a CEO of maybe a good company, a multinational company? Can't our company be in a Fortune 500 organization also? Things are possible. Think long term and have audacious goal. When we think of some audacious goal, of course we can achieve also, right? That clear-cut path will be there. We will have a timeline for that,
resources will come automatically. And think of the milestones also. So long-term and short-term goals both are necessary, right? Another thing which is very important for us to know is that goals should be smart. Goals should be smart. When I say smart, it's an abbreviation where S stands for specific goals. Specific means well-defined goal, clear, unambiguous in all terms, specific goals. M stands for measurable, right? I would like to pass my MBA with good percentage. What is this good? I would like to be in top 5, top 7, top 3. That is measurable goal. It should be attainable, achievable. You know your strength, you know your weakness. Set a realistic goal, right? Achievable goal, right? As per your strength, weakness, value system. And finally, the last thing is it should be time target. I want to become CEO. I want to become an entrepreneur. At which age? In next 10 years, next 50 years, next 5 years? Time is very, very important. That gives urgency also, right? So friends, do a SWOT analysis. SWOT analysis, SWOT, where S and W relates to you, strength and weakness. Assess yourself. You know yourself better. What is your strength, right? What is your weakness? So for somebody, communication and presentation skill may be his or her strength. For somebody, it can be a weakness. Confidence can be a strength for somebody. It can be weakness for somebody, right? A good team, a good support, family support may be a strength for somebody. It may be a weakness for somebody, possible. Good economic support, right? So a lot of things you can assess yourself, and under the wake of that, see the environment. What are the opportunities available? What are the challenges available? Right? So for example, in last 1 year, all of us have seen COVID as a challenge. It became a challenge for you, me, entire world. So be ready for challenge and become resilient. Develop agility in yourself, right? So challenges are bound to come, but look for opportunity also. Where lies the opportunity? Try to build your career. Try to develop competencies, skills in those areas. For example, in contemporary times, it's a technology era, and we talk about industry 4.0, right? So there is an abbreviation called as SMAC, very contemporary topic, SMAC. Social media, that is S. M stands for mobility, A stands for analytics, C stands for cloud. Social media, mobility, analytics, and cloud. And when I say analytics, I'm including, let's say, big data, data mining, all those things also. Now, this is a very, very great, lucrative career direction or opportunity in the modern time. When you read about such kind of development, when you read some blogs, contemporary newspapers, magazines, right? Some YouTube talks, right? Some contemporary good webinars like this, right? Then you can develop idea in which direction the world is going. What is going to be the future of the industry after 5 years, 10 years down the line? So listen to the people, talk to the people, industry stalwarts, right? At various forums, communicate with people, develop listening ability, read the things and observe the phenomena. That's how, friends, you can set the goal. A very famous couplet comes to your mind. मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है, सपनों में जिनके जान होती। मंजिलें उन्हीं को मिलती है, सपनों में जिनके जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता। पंख मींस रिसोर्सेस। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। क्या बात है, wonderful. Your aspiration, right, is equally important, right? Develop the perseverance. Develop perseverance. Have confidence. Yes, I can do it. In the path, there will be obstacles. There will be challenges. But जीवन में दोस्तों अगर कठिनाइयां नहीं है, तो सफलता का भी मजा नहीं आएगा. Be ready to face the challenges, right? Accordingly, identify your weakness, overcome those weaknesses, and consolidate your strength. And write down your goal somewhere. Maybe in your keychain, maybe on your wallpaper somewhere, mobile screen, isn't it? Some post-it notes. जिस टेबल पे बैठ करके पढ़ते वहां लिखिए 10 साल में मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है. Every time you will see those post-it notes, every time when you will see your screensaver, it will keep on reminding you.
और तब हर दिन सुबह शाम दिन रात आपको ख्याल से रहेगा कि 10 साल बाद 20 साल बाद मेरा गोल क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, राइट? सो बहुत सारी बातें दोस्तों की जा सकती है। मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करता हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो सबसे पहले अपना गोल बनाइए और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। You definitely can do it. I have great confidence in the youth power of today, of India as well as world. And finally, the biggest youth icon of the world and India, Swami Vivekanand. Way back he said, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए. Arise, awake and stop, not until the goal is achieved. So our best wishes to all of you. Thank you very much. Wonderful, wonderful, Dr. Nitesh, wonderful. Very nice, very nice. Thank you very much, Dr. Nitesh, sir. Friends, I hope that you all are enjoying. Now I welcome Professor Samish Dalal, sir, to present his views. Welcome. Right, sir. Thank you very much, Himanshu sir. That's so kind of you and wonderful. संदीप जी, नितेश जी, बहुत ही बढ़िया. नितेश जी, बहुत ही बढ़िया. ऐसा लग रहा है कि मतलब फिर स्टूडेंट बन जाए और आपकी बातें फिर सुनते रहे. फैंटास्टिक रहा. सो दोस्तों, मुझे बताया गया है कि I'll be using a combination of गुजराती एंड हिंदी. सो देयर विल बी टच ऑफ बोथ. तो मैं इंग्लिश अभी बंद कर दूंगा और हम लोग हिंदी और गुजराती के ब्लेंड में बात करने वाले हैं. एंड मेरा बहुत सिंपल उद्देश्य है, बताया जो है कि स्टूडेंट लाइफ में आप क्या करेंगे. नॉर्मली बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एस्पेक्ट पे फोकस करने वाला हूं और वो है कि हाउ कैन वी वर्क विद अदर पीपल. एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं. आप सब लोग अपना हाथ ऐसा करिए. अच्छा, वेरी गुड. एंड बुरा मत मानिएगा, ये कोई कांग्रेस का प्रमोशन नहीं हो रहा, तो कुछ भी नहीं होएगा, चिंता मत करिए. ओके, फिर उसको जरा इस तरह से देखिए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. मेरे हाथों में एक थोड़ा प्रॉब्लम है, जरा आप लोग भी देख लेना. मेरी एक उंगली छोटी है, फिर एक बड़ी है, और फिर एक बड़ी और फिर एक छोटी है. मतलब सब अनइवन है, एक भी लेवल में नहीं है. तो मुझे कोई पंडित ने बताया कि भाई साहब इसको काट के लेवल कर दो. करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए ना, बिल्कुल. बट तो बोल रहे क्या कर रहे हो सर, ऐसा मत करवाइए. मतलब बरोबर है ना. भट्ट साहब और त्रिवेदी साहब दो ब्राह्मण मेरी बात सुन रहे, बोले कौन से पंडित बताओ मेरे को. तो इंटरेस्टिंग ये चीज हुई कि काटनी तो नहीं चाहिए. तो फिर ये अनइवन है, उसका फायदा क्या है गाइस? दैट्स द फर्स्ट लेसन ऑफ द डे. दैट्स द फर्स्ट लेसन ऑफ द डे. हम जब फैमिली की बात करते हैं, मतलब मैं सिखा रहा हूं फैमिली मैनेज बिजनेस के बच्चों को, और मैं सब मतलब फुल टाइम उसी की तो बात करता रहता हूं. तो जब हम फैमिलीज की बात करते हैं, जब हम फ्रेंड्स की बात करते हैं, तो इट्स लाइक दिस वंडरफुल हैंड दैट वी हैव. इट्स लाइक वंडरफुल हैंड. हमारे हाथ जैसा है, एक उंगली छोटी, एक बड़ी, एक ऐसी. हर एक की अपनी एक ताकत है, एंड कलेक्टिवली ये बहुत बड़ी ताकत है. जब आप अंडरग्रेड का कोर्स करते हैं या पोस्ट ग्रेड का कोर्स करते हैं, आपकी स्कूल कॉलेज તમને ઘણા બધા કામ આપશે. એવું કહેશે કે તમે એક કામ કરો, કાલે આ સ્કૂલનો એક પ્રોજેક્ટ કરો. તમને એક કામ આપશે કે તમે આ એક ઇવેન્ટ કરો. गाइस, यदि आपको सबसे डिफिकल्ट काम दिया जाता है और आपको वो चीज नहीं आती है, प्लीज उस काम को स्वीकार लो. प्लीज उस काम को स्वीकार लो और फिर मजा आएगा. मान लो मुझे काम दिया भट्ट साहब के साथ करने का, और मेरे को भट्ट साहब के साथ जरा भी पटती नहीं है. फैंटास्टिक, टेक दैट अपॉर्चुनिटी. योग की 3 चीज होएगी. नंबर 1, डिफरेंट फिंगर को एक दूसरे का ताकत जानने का चांस मिले. पहला काम ये होगा. वी आर ऑल फुल ऑफ जबरदस्त स्ट्रेंथ. होता है, मैं और भट्ट साहब समझ लीजिए कि रियल ब्रदर्स हैं. मैं उनको बोलता हूं तुमको तो हिसाब जरा भी आती नहीं, और ये बोलता है तुमको मार्केटिंग नहीं आता है. बराबर है ना. मेरे को मार्केटिंग नहीं आता, लेकिन मेरे को हिसाब आता है. तुमको हिसाब नहीं आता, लेकिन तुमको मार्केटिंग आता है. दोनों मिलके काम करेंगे तो डेफिनेटली आउटपुट बेटर आएगा. लर्न टू वर्क विद अदर्स गाइस, क्योंकि ये जो डिफरेंट फिंगर्स हैं, उसको कलेक्टिव स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल है. आपको स्कूल कॉलेज में बहुत अवसर मिलते हैं इन सब चीजों के. आपको कॉलेज के प्रोफेसर, स्कूल के टीचर्स काम देते हैं कि बेटा एक काम करो, ये प्रोजेक्ट करो, फन फेयर को ऑर्गेनाइज करो, डिकना फलाना एक्सेट्रा काम करो.
प्लीज मेक श्योर यदि वो चीज नहीं आती है तो उस चीज को इमीडिएटली ले लो, फर्स्ट थिंग टू डू। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि ग्रैब दैट। यदि क्लास में ऐसा बोला जाए कि आप में से किसी ने डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया है, हम तो 2 जन के बीच में भी नहीं बोल सकते हैं, बेस्ट है, ले लो ले लो। क्यों? क्योंकि 2 जन के बीच में नहीं बोल सकते, शायद 200 में चल जाए, हो सकता है कुछ नया सीख लोगे, बट वो सीखने के लिए आपको थोड़ा ओपन होने के लिए किसी और के साथ फ्रेंडशिप, यारी, दोस्ती वगैरह होएगी, इसलिए वर्किंग टुगेदर वर्क्स, एक दूसरे आदमी को साथ में ले लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न कि हम साथ में कोई भी अपॉर्चुनिटी कर देते हैं। मेरा दूसरा फाउंडेशन, लर्न टू एक्सेप्ट द वे अदर पर्सन इज। एक इंटरेस्टिंग वाक्य बताना चाहता हूं। हम लोग फैमिली मैनेज बिजनेस में पढ़ाते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति डिफरेंट सोचता है, कोई व्यक्ति डिफरेंट सोचता है। मान लो मैं और दीपक भाई कोई प्रोजेक्ट करने जाते हैं एंड मैं बोलता हूं ना नहीं होएगा, दीपक भाई बोलते हो जाएगा, ना बोलता हाँ ना हाँ ना हाँ ना, 15 मिनट तक चलता रहता है और उसके बाद इवेंचुअली मैं बोलता हूं ठीक है यार तू बोलता है तो कर लेते हैं, एंड फिर करते हैं एंड डूब जाते हैं। उस टाइम पे दीपक भाई बोलता है मेरे को बचाओ, और मैं उनके रस्सी डालता बोले चलो आ जाओ ऊपर। बोलते तुम रस्सी लेके चल रहे थे? बोलते मैंने पहले मना भी तो किया था, तो मैं सोचा कि लेट मी कीप प्लान बी, हो सकता है काम आ जाए। यदि दोनों सेम सोचते तो दोनों खड्डे में जाते, पकड़ने वाला और बचाने वाला कोई नहीं होता। गाइस, पर्सन विद डिफरेंट थिंकिंग ने उसका एक्सेप्टेंस आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरे साथ एक भाई साहब हैं और यदि वो कहीं पे बोलने के लिए जाते हैं तो बहुत मजा आता है। वो उसके जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उसको बोलते हैं मेरे को कितने स्टूडेंट होंगे, ये बताओ ये बताओ वो बताओ, इतना डेटा मांगते हैं। कभी कभार ऑर्गेनाइजर भी सोचता है भाई आप इतना डेटा कहां मांग रहे हैं, पर वो इतना टाइम लेते हैं प्रिपेयर करने के लिए, इतना वक्त निकालते हैं, सब्जेक्ट में इतने डिटेल में चले जाते हैं। और मेरे पास एक दूसरे स्पीकर है जिनको रात को 1 बजे भी बोलो कि आपको 1 घंटे पे बोलना है, ओके बोल सकते हैं। कैपेबिलिटी है दोनों की अलग ताकत है। मैं दोनों को स्वीकारता हूं, पर जब ये दोनों को स्वीकारते हैं तब हमारी एक टीम बनती है। आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, आपका फ्रेंड, आपका ब्रदर, आपका टीचर। आप क्लास में 5 टीचर पास हो जाए, कोई टीचर थोड़ा मनोरंजक होता है, कोई टीचर थोड़ा बोरिंग होता है, कोई टीचर कंटेंट पे फोकस करता है तो कोई टीचर पार्टिसिपेशन पे फोकस करता है, पर ये सब मिलते हैं ना तो लर्निंग का मजा है। सब मनोरंजक हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, सब बोरिंग हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, सब एक्टिविटी कराएंगे तो बोलेगा कि क्लासरूम में एक्सपीरियंस नहीं हुआ, सब क्लासरूम में बिठाएंगे तो बाहर के एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, और वो कॉम्बिनेशन कब सक्सेसफुल होता है? जब हम लोगों को स्वीकारते हैं। लर्न टू एक्सेप्ट पीपल विद डिफरेंसेस हैव कैपेबिलिटीज। पीपल विद डिफरेंसेस हैव कैपेबिलिटीज। वो डिफरेंस नहीं, वो कैपेबिलिटी है। एंड कैपेबिलिटी का सबसे अच्छा पहचान ये होता है कि दूसरों के साथ काम करते हो तो उसमें अच्छाई या उसके एट्रीब्यूट्स देखो, उसके पॉजिटिव्स देखो। अभी बोलेंगे कि सर कैसे देखने का, ये भी एक चीज है, क्योंकि मैं कोई ज्ञान थोड़ी नहीं दे रहा हूं, कैसे देखना वो भी जरूरी है। 2 सिंपल चीजें हैं, मैं आपको एक छोटा सा क्या कहते हैं टूल देता हूं वो करने के लिए। एक काम करिए, एक छोटा सा इवेंट करिए, प्रोजेक्ट करिए, साथ में बैठिए। से फॉर एग्जांपल आज शाम को खाने के लिए जाते हैं, 4 फ्रेंड्स इकट्ठा होकर खाने के लिए जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में तो चलता रहता है। कैसे अब वो डिसाइड करते हो, उन्हें सीखो। कौन डिसाइड करता है खाने का मेन्यू, वो सीखो। कौन पैसे को मैनेज करता है, वो सीखो। पता चला हर व्यक्ति का एट्रीब्यूट फटाफट बाहर आने लगा, ऑटोमेटिकली काम हो जाता है, ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। जब आपको अवसर मिलता है तो बोल सकते हैं बॉस अपन बाहर गए थे तो तूने हिसाब हैंडल किया था, बरोबर हिसाब हैंडल किया था, 1 भी रुपया किसी का ज्यादा नहीं गया, तो तू काम करना, अकाउंट हैंडल करने। और वो सामने से ही बोलेगा हाँ मेरे को वैसे भी नंबर्स में बहुत मजा आता है, आपका अकाउंटेंट मिल गया। दूसरे एक आदमी ने बोला कि मैं ये जगह फिक्स किया। बॉस तूने जगह फिक्स किया ना, बहुत अच्छी जगह थी यार, लोकल मार्केट में अपने को तो कहीं पे भी छोड़ दे, 5 मिनट में मैं इधर पहुंच सकता हूँ, रास्ता तो मेरे को पक्का मालूम है। एक काम करना, तू ये इस चीज में पार्टिसिपेट कर लेना। इमेजिन आप पोटेंशियल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जितना हम सोचते हैं। बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि कोई चीज करना बड़ा मुश्किल है, नहीं है। हाँ करना मुश्किल है। और वो हाँ क्यों नहीं होती? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हाँ नहीं करने का। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ था, हमारे क्लास में एक इवेंट करना था,
तो हमारे आई वाज वन ऑफ दोज 2-3 प्रोफेसर्स जो चूज करते हैं कि कोई बंदा आएगा, तो जैसे वो टिपिकल इंडियन आइडल में होता है ना, ऐसे एक बंदा आता है और अपने आप को प्रेजेंट करता है, फिर हम बोलते हैं हाँ यस हाँ ना, ऐसा करके उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। तो उसमें एक बंदा आया और उसने बोला कि मैंने कभी आज तक धंधे में, हमारे फैमिली में भी कोई इवेंट नहीं किया है, धंधे में भी कुछ नहीं किया, रिमेंबर दैट। बोलो करता क्या है? सुबह 7:30 बजे उठता हूं, कसरत करता हूं, 9:30 बजे तक प्लांट पे पहुंच जाता हूं, दोपहर में 1 बजे खाना खाता हूं, शाम को 6:30 बजे प्लांट से निकलता हूं, 7:30 बजे घर पे, लगभग 11:30 बजे तक तो सो जाता हूं। दिस इज टू ट्रू, सॉरी दिस इज टू गुड फॉर अ स्टूडेंट। मतलब ये मैं किसी को, देखो जो संदीप जी भी बोल रहे हैं, हाँ ये हकीकत नहीं लग रहा है, मतलब ये कोई भी बच्चे के लिए बोलो ना कि somebody 22 साल ये करता है, सर ये साधु है, मतलब ये हैंग आउट नहीं करता, पार्टी नहीं करता। मैं बोला सैटरडे कहां जाता? सत्संग में जाता हूं। ये लड़का है, रियल स्टोरी, नो आर्टिफिशियल। तो मैंने काम कर, बेटा तू एक काम कर, तू इसका ऑर्गेनाइजिंग इवेंट हो जाए। बाकी लोग बोले सर इसने कोई भी ऐसा नहीं किया है जिसमें इसने कुछ ऐसा पब्लिक के साथ काम किया। ही नीड्स टू लर्न, क्योंकि कल को जाके ये जब कोई बड़ा सा कंपनी अपना खुद का बिजनेस रन करेगा, खुद की कैपेबिलिटी आएगा, तब ये कैसे करेगा? करेक्ट। एंड गाइस ट्रस्ट मी, वो इवेंट के बाद वो सामने से मेरे पास आता है, सर एक और इवेंट करना है सर, मेरे को तो मजा आने लगा है। अपनी कैपेबिलिटी पहचान ली है, तो ब्रिंग इट आउट गाइस। सो यदि कोई बच्चा नहीं लेके आता है, टीचर मदद कर सकता है, टीचर मदद कर रहा है या टीचर को स्पॉट नहीं हो रहा है, बच्चे को सामने से आना चाहिए। पर डोंट बी रेजिलिएंट, सिट बैक करके पीछे मत हट जाओ कि नहीं ऐसा है, मैंने कभी किया नहीं है, अनुभव नहीं किया है। हम में से बहुत सारे लोगों ने जिंदगी में बहुत सारे अनुभव नहीं किए। आई मीन वी आर नॉट गॉड, सब कुछ हमने किया ही नहीं। हम बहुत सारे, मैंने जिंदगी में पहली बार जूम पे जब क्लास लिया ना, तो मेरे को लगा कि ये खड़े खड़े बोल सकते हैं, बरोबर नहीं है सर, ये बैठ के कुर्सी में कैसे बात करेंगे। पर आज गेम चेंज हो गया। सो हम जब सीख सकते हैं, आई एम श्योर यू गाइज आर वंडरफुल यंगस्टर्स, आप सीख सकते हैं। सो मेरा सेकंड फंडामेंटल था लर्न टू एक्सेप्ट द पीपल द वे दे आर। ओके, सो पहला ये था कि दूसरों की ताकत को पहचानो, learn to understand the strength of the other people. Second, accept the people the way they are. Third and final point, don't think कि आप अकेले सब कुछ कर सकते हो। ये जो मैं बोल रहा हूं उसको एग्जाम हॉल में यूज मत करो, उसमें अकेले कोई सब कुछ करना है। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हैं, मतलब जब हम बिजनेस की दुनिया में आते हैं, हमारे इकोसिस्टम में आते हैं, जॉब लेने के लिए, धंधा करने के लिए या अपना करियर बनाने के लिए, तो हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि मैं जो कुछ भी हूं वो इनके कारण हूं, मैं जो कुछ भी हूं इनके कारण हूं। इट इज गुड टू गिव क्रेडिट गाइस, बट एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ इनके कारण हूं ऐसा नहीं है। एनवायरमेंट में बहुत सारे लोग हमको जो हम हैं उसको बनाते हैं। I always keep telling people, आज मैं जो कुछ भी हूं is not because of what I am. मेरी ये लाइन याद रखना माय बच्चा, याद रखना, लाइफ टाइम याद रखना, अंग्रेजी में जाएगा लेकिन जरूरी है। I am what I am is not because of what I am. I am what I am is not because of what I am. I am what I am is because what my student made me. मैं मेरी बात कर रहा हूं, मतलब मैंने बच्चों को नहीं बनाया, बच्चों ने मेरे को बनाया। तो सेम एट्रीब्यूट यदि हम अपने लाइफ में लेके आते हैं कि यार मतलब मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं, अहम ब्रह्मा ना, पर हां मैं 4 जन मिलके सर हम कुछ भी कर सकते हैं, ये लाइन उतनी ही सच है, उतनी ही सच है। तो कल को यदि आपके पास कोई इवेंट आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है, प्लीज मेक श्योर कि आप दूसरों की कैपेबिलिटी को पुल करो, अपने आप को। मेरे को एक बहुत मस्त इंटरेस्टिंग चीज मालूम पड़ी थी। मेरे को एक स्टूडेंट आके बोलता है कि सर मेरे को तो कभी ये किसी से मांगने में बड़ा ईगो नड़ता है। मैं तो वेरी गुड, मतलब ईगो बहुत पॉजिटिव वर्ड है। सर क्या बोलते हो? मैं तो बराबर है। तेरे को यदि किसी से मांगने में क्या कहते हैं अड़चन होती है क्योंकि तेरे को लगता है सब कुछ तू कर सकता है, तो प्रूव करने। सर वो पॉसिबल नहीं है। मैं तो करेक्ट है ना, तो फिर करेक्ट है तो फिर मांग ले। सर पर कैसे मांगते हैं देख बताता हूं। एंड आई एक्चुअली सैट विथ हिम। देखो क्या चाहिए,
सर हमारे एक इवेंट के लिए ना इस तरह का बैनर चाहिए, अभी जो टाइम है उसमें बैनर इतने टाइम में आ नहीं सकता है सर, कोई कनेक्शन है तो बैनर जल्दी आ सकता है। वेरी गुड, लेट्स लुक एट द बैनर गाय। उसको हमने फोन किया, मैंने उसको बैनर वाले को एक ही चीज बोली, मैं तो भाई साहब ये बैनर इतने टाइम में दे सकते हैं तो नीचे हम आपका नाम छाप देंगे कि ये बैनर प्रोवाइडेड बाय फलाना कंपनी, तो आपको भी थोड़ा क्रेडिट मिल जाएगा, कॉलेज को भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, स्टूडेंट कम्युनिटी को भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, प्लीज। वो सामने वाले ने बोला सर आप मेरे को थोड़ा टाइम दो। थोड़े टाइम के बाद उसका सामने से फोन आया, ठीक है सर मैं वो लकड़ी के फ्रेम के साथ बैनर हैमर करके पूरा सेटअप करके दूंगा। और लड़का बोला सर कैसे हुआ? मैं तो बेटा जैसे तुम्हारा ईगो है ना उसका भी एक ईगो है। मैंने उसको बताया कि भाई आपको रिकॉग्निशन मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम है? सर आई लर्नड इट, एवरीबडी इज हियर फॉर सम पर्पस, दैट्स द आइडिया बेटा। यदि तुम साथ में काम करोगे तो रिकॉग्नाइज करो, अप्रिशिएट करो, समझो कि वो तुम्हारे साथ कोई पर्पस से जुड़ रहा है एंड तुम भी उसके साथ कोई पर्पस से जुड़ रहे हो। ऐसा नहीं कि वो ही आ रहा है, तुम भी उसमें जुड़ रहे हो, तो तुमको बैनर काम आएगा, उसको बैनर का डिस्प्ले काम आया। तो नेक्स्ट टाइम कभी हुआ तो तुम उसको रिकॉग्नाइज करो एज ए थैंक्स या ऐसा कुछ करके, पर वो बंदा भी तुम्हारे लिए काम करेगा। थैंक यू वेरी मच सर। मतलब बेटा इतना ही करना है, इतना ही करना है, इतना ही छोटा काम है। एनीवेज माय फ्रेंड्स, मैं एक सिंपल फंडा के साथ चल रहा हूं, मतलब मैं आज की बात कर सकता हूं, ये मेरे सुनहरे अवसर की बात कर सकता हूं। मतलब आई हैव बीन फॉलोइंग एंड आई एम अ वेरी आर्डेंट स्टूडेंट ऑफ हिमांशु सर। मतलब बहुत सारी चीजें मैं उनसे सीख है एंड उनसे सीखते सीखते मैंने ऐसा समझ लिया कि गाइस लाइफ में कितनी भी प्रकार की चैलेंजेस आती है, उसको आप किस तरह से एक्सेप्ट करते हो इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे कभी कभार बोलते हैं कि समीश भाई आपसे मुझे कुछ सीखना। मैं बोला सर आप मेरे को पहले भाई मत बोलो और पहले मेरे से सीखना नहीं आना सर, मैं आपसे ही सीखने वाला हूं। कभी भी गंगा से गंगोत्री नहीं सीखी है, गंगोत्री से ही गंगा शुरुआत हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड ये चीज एज ए स्टूडेंट जो ग्रेटिफिकेशन है वो दूसरों के साथ काम करने से ही आती है, क्योंकि जब तक वो दूसरों से काम करने से ग्रेटिफिकेशन, हमको बहुत बार ऐसा लगता है आई एम डन एवरीथिंग। नो, आई एम नो। बहुत बार एक छोटा सा ड्राइवर गाड़ी का मेरे को बोलता है सर गाड़ी तो मैं ही चलाता हूं तो मैं ही अचीव करता हूं मैं हंसने लगा, तो बेटा पेट्रोल किसने डाला? सर वो तो पंप पे लगवाया ना। मैं तो मान ले कि नहीं डलवाया होता तो सर मैं गया ना पंप पे लगवाने के लिए, बंदे ने डाला नहीं होता तो, एंड फिर वो चुप हो गया तो मैं सर खुद डाल देता। मैं तो सोच कंपनी से आया नहीं होता तो। तेरी कामयाबी में पेट्रोल कंपनी से लेके प्योरिफिकेशन से लेके हर वो प्लांट प्रोसेस एक्सेट्रा सब कुछ इन्वॉल्व है। अग्रीड सर। तो जब हम इस स्केल पे देख सकते हैं, हम तो स्टूडेंट है यार, स्टूडेंट है। हम में से कितने सारे लोग खुद नोट्स नहीं बनाते हैं, अपने फ्रेंड से नोट बना के एग्जैक्ट फोटो को निकाल के रख लेते हैं। फिर शायद हम लोग पढ़ने में अच्छे हैं, ग्रास्पिंग अच्छा है, लिखने में अच्छे नहीं है, फिर भी हम अच्छे एग्जाम क्रैक कर जाते हैं और फिर बोलते हैं बॉस मैं टॉप किया। बॉस तूने टॉप नहीं किया, तूने संदीप भाई की नोट्स सीख के टॉप किया। दैट्स सिंपल, दैट्स सिंपल। मतलब मैंने इतने सारे स्टूडेंट देखे जो नोट्स इतने मस्त बनाते हैं लेकिन वो बेचारा क्लास में प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। एंड देयर आर सम स्टूडेंट वो किसी और के नोट्स को लेके इतना फर्स्ट रिप्रोडक्शन कर सकता है कि भाई उसके रैंक अच्छे आ गए। अप्रिशिएट करो तुम्हारे साथ जो बंदे हैं, क्योंकि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते लेकिन साथ में मिलके सब कुछ कर सकते हो, शायद बहुत कुछ कर सकते हो। Okay, so with those words and with those wishes, I wish you all the best, my dear students. Have a great time. The student life is a brilliant life. Trust me. I have enjoyed it and I always believe कि उसमें जितना आपका संदीप जी ने बताया ना कि जो आपका क्रिएटिव फाउंडेशन रिले हो जाता है, जो आपका उधर जो क्या कहते हैं बेस सेटअप हो जाता है, दैट गोज अ लॉन्ग वे इन योर लाइफ। ओके, वर्ल्ड की बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे बिजनेसेस, कॉलेज डोम, कॉलेज कैंटीन, कॉलेज के कंपाउंड, कॉलेज की बेंचेस और लास्ट पेज ऑफ द नोटबुक पे बने हैं। I wish you all the best. We would like to hear something from you in case you create such a company. God bless you. Thank you very much. Great. Wonderful, wonderful, Samish sir, wonderful. Beautiful, wonderful. Yes, friends, તમે લોકોએ જોયું હશે ફ્રેન્ડ્સ કે કેટલું બધું સરસ આ ત્રણ મહારથીઓએ વાત કરી. ગુજરાતીમાં નાટક હતું મહારથી. All these three are Maharathis. Before I start,
the last thing જે સમીશભાઈ દલાલ સરે જે હમણાં વાત કરી, હું તમને એક વસ્તુ કહી દઉં કે how to work together. I'm giving you an example. Sandeep sir was speaking from Mehsana. Dr. Nitesh sir was speaking from Ahmedabad. Samish sir was speaking from Dubai. Deepak sir is handling the technical aspect from Billimora. And now I am speaking from Canada, Vancouver. Unless and until all these things does not come without an ego, then we can flourish as a team. So my pranams and charan sparsh to Dr. Sandeep sir, Nitesh Bhatt sir and Samish sir. It was a wonderful session. मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज पूरे ये सिर्फ आपका तीनों का मैंने पूरा लिख कर रखा हुआ है. And I think it will be very much helpful for me for my next program in the corporate world. Friends, चार चीजें, हम लोग चार स्पीकर्स हैं, तो चार की तरह चार दिशाएं हैं, लेकिन ईश्वर ने हमको चार गिफ्ट भी दी है, माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल. सो माइंड इज योर IQ, बौद्धिक क्षमता જેને કહેવાય. 60,000 ideas we are having every day. કોઈ દિવસ લખ્યા આઈડિયા? કોઈ દિવસ લખ્યા? Did you write down the idea? હોર્ડિંગ આપણે વાંચીએ છીએ ને આઈડિયા કેન ચેન્જ યોર લાઈફ. વોડાફોન ને भी चेंज कर दिया, आइडिया ने भी चेंज कर दिया. One idea can change your life. 60,000 ideas in one day. So अगर आपकी उम्र 20 साल या 25 साल या 30 साल है, तो आप सोचो 25 करोड़ विचार तमने આવ્યા. અત્યાર સુધીમાં 25 કરોડ વિચારોનું કર્યું શું? Where is that capital? હમણાં ડોક્ટર સંદીપ સરે કીધું capital building, a capital thoughts નું કર્યું શું? What did we do? See, મિત્રો, તમારી પાસે જેટલા પણ આઈડિયા આવે છે ને લખો. Please write it down. In 1989, in one of the programs, I wrote down goal setting. जो डॉक्टर नितेश सर ने भी बात की, goal setting. तो मैंने goal setting में लिखा था, I want to become a trainer. And I became a trainer in 1992. What you think, but that one idea clicked. I left the job and I started training. Mind has got tremendous potential. Please read The Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy, The Secret by Rhonda Byrne, and The Power of Intention by Dr. Van Dyer. આ ત્રણ ચોપડીઓ તમે ચોક્કસથી વાંચજો કે માઇન્ડનું કેટલી શક્તિ, અથાક શક્તિ ઈશ્વરે આપેલી છે. We don't know. ડેનિયલ ગોલમેન એક ચોપડી લખેલી છે, ફોકસ. जस्ट सोचना, जब आप पढ़ते हैं कितनी बार उठते हैं, कभी मोबाइल देखते हैं, कभी खिड़की में से देखते हैं कि कोई नहीं जान निकली. अब तारे शू जान भले निकली, तेरे को क्या करने गए जान में, तू नाचवा जावानो. बट वील गो इन द विंडो एंड सी, हाँ जान, वेरी नाइस, दूल्हा कैसा है. अरे यार तू पढ़ यार, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलिप कॉटलर ने क्या लिखा है. Study those 4 P's or 5 P's. But we'll see the 6th P outside the window and peep outside. Mind has got tremendous potential, but we don't focus. So किताब का नाम है फोकस, डैनियल गोलमैन ने. एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. दलाई लामा का जो राइट हैंड मैन है, उनका नाम है थुमस्टन जिम्पा. Dalai Lama would speak in Tibetan language. He would speak for 15 minutes
and uska right hand man Thumston Jimpa is sitting there. He is listening. Then Dalai Lama would look at him. He would sit down and Thumston Jimpa would stand up and he would convert the entire session of 15 minutes. He is not writing down. આખું lecture 15 મિનિટનું એ ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરીને sequence wise એ બોલી જાય છે. Daniel Goleman interviewed Thumston Jimpa and he asked that how are you able to do this? He told that when I was 8 years old, I was being trained on mind management. And since last 20 years, I have not touched the mobile phone. Focus. Mind management, focus. Very important for the students. Second, body. Physical fitness. Virat Kohli is my favorite cricketer. Sachin Tendulkar is my favorite cricketer. Shah Rukh Khan is my favorite actor. Akshay Kumar is my favorite actor. कभी पूछा है इन लोगों को कि ये फिजिकल फिटनेस किस तरह से रखते हैं? कभी विराट कोहली को पूछा? વિરાટ કોહલીનો એક ઇન્ટરવ્યુ ચાલતો હતો. એક પાકિસ્તાનના મેચમાં Pakistan batsman just hit a four. He ran and he could not catch the ball, fell down. All the people told, अरे यार कैच मिस कर दिया. दूसरी इनिंग में अगेन कोई दूसरे पाकिस्तान बैट्समैन ने बॉल लगाया, वो दौड़ा, कैच कर लिया. वही same people, those 5 million people who were criticizing, within 48 hours, they were appreciating Virat Kohli. So Virat Kohli told the interviewer, "Ke first inning I ran for 7 seconds, I could not catch the ball. In the second inning, I ran for 5 seconds and I was able to catch the ball. But all these 5 million people who were criticizing me, they don't know the difference between 7 and 5 seconds, the 2 seconds to run fast. I have practiced 20 years." Now, this is a physical fitness. Think about it. Shah Rukh Khan, working since last almost 26 years, Bollywood Badshah King Khan is not a joke. And he is having almost 16 pains in his body, but still working 72 hours without a break. And my dear friends, the costliest library in the Bollywood history is with Shah Rukh Khan. He is having 20,000 books. And he's reading daily 3 books. One while going to sleep, second while getting up in the bathroom, and third one while going to the studio. Third, heart. Emotional quotient. How do you deal with people? હમણાં જે રીતે સમીક્ષરે કહ્યું, how do you deal with people? IQ, that is your mind, will give you a job. I repeat, IQ will give you a job. But EQ, the heart, how to deal with people, will give you a promotion. Because you may rise in the career in the corporate world, how you deal with people. So IQ can give you a job, EQ can give you a career. Fortune 500 CEO बनવું હોય તો how you deal with people. It's a great art. And this art and craft you have to learn. You can learn from your parents also. You can learn from your grandfather, grandmother also. હમણાં જે ડોક્ટર સંદીપ સરે કહ્યું કે are we respecting the parents? Do we take that sanskar from the parents, from the grandparents? This is also very important. So mind, body, heart, that is EQ, and last one is your Atma, that is your SQ, spiritual quotient. Mind is your intelligent quotient, body is your physical quotient, heart is your emotional quotient,
and soul is your spiritual quotient. Soul એટલે atma, which is there in our body, in our heart. It is observing you every time. What you are thinking, positive or negative, he is observing you. Why I tell he, soul cannot be told it. It is known as he, capital H-E, because that is Lord Krishna within you. Atma so Paramatma. So Paramatma is not outside, Paramatma is within you. So I was witnessing one beautiful lecture, and in that one Swamiji told that every student must pray for 12 minutes. I repeat, every student must pray for 12 minutes. He will improve his memory and concentration power. So are you able to deal with this, that spiritual quotient? આધ્યાત્મિક બનવાનું નથી, પણ આધ્યાત્મિક રસ્તો પકડીને ક્યારેક પણ આપણે સારા વિચારો, સારી વાતો આપણે જે શીખી શકીએ, એનાથી આ ચાર માઇન્ડ, બોડી, હાર્ટ એન્ડ સોલનો સમન્વય કેવી રીતે કરીએ છીએ એ જ આપણે શીખવાનું છે. So thank you very much. I think my time is over, and I really thank Dr. Sandeep sir. I thank Dr. Nitesh sir. I thank Professor Samish Dalal sir. I thank Deepak Bhai also for their wonderful cooperation, contribution, and help and support. તમારા ચાર સિવાય હું કાંઈ ન કરી શકત, પણ આ પ્લેટફોર્મ ઉપર આવીને જે વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે આપનો સર્વનો જે પ્રેમ હતો અને જે કેર, કન્સર્ન એન્ડ કમિટમેન્ટ that you have shown, I salute, accept my pranams and charan sparsh to all of you.